my name is Ikra Chaudhary. I'm founder of Valencia Leggett Club. Today I have my most favorite person I have met in my life is with me. She is Dr. Yasmeen Javed Khan. She is big gynecologist. Recently she moved from Canada and she is running a platform in Canada by name of GMS Solution Canada. She's the co-founder and her daughter, Miss Chanel Khan, is founder of GMS Solution Canada, and it is a wonderful platform because it's working on women health and wellness. So, because our purpose was same and VLC and GMS Solutions working on same thing, so we collaborated and signed an MOU recently. So we thought that we will now start teaching the masses that how they can make healthy communities. So we have Dr. Yasmeen Javed Khan. Please tell about yourself a little bit. Thank you very much, Ikra, for being our collaborator and supporter of the GMS Solution Canada. So, just a little background and a humble background that I'm born and raised Pakistan, and I got my graduation from Fatma Medical University and did my initial training from Pakistan, and we moved to UK and where I did my residency from the UK and Canada, and got the highest qualification from UK, which is MRCOJ. Apart from serving on various aspects of the women healthcare, one of my passion is now towards the preventive healthcare of women. Great. तो जब हम preventive healthcare की बात करते हैं तो I believe कि इस aspect of women care पे ज़्यादा काम नहीं किया गया. तो especially पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में इसका concept नहीं है. तो feminine hygiene हमने एक topic choose किया जो कि मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी कि फेमिनिन हाइजीन है क्या? मतलब बहुत सारे लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, हाँ, इंक्लूडिंग मी. जी, तो पहले थोड़ा सा तो ये बताइए जी कि what is that? So, feminine hygiene, I think in polite words, you can say कि taking care of private body parts of women of all ages. Or it pertains to all age groups with the special issues and like the menstruation, और जिसके बारे में मैं ये कहूँगी कि बहुत taboo समझा जाता है और inhibited है. इतना मुश्किल है कि एक बेटी एक माँ अपनी बेटी तक को नहीं कन्वे कर पा रही प्रॉपर्ली. ऐसा ही है. सो मैं ये पूछना चाहूँगी डॉक्टर यास्मीन कि ये जो फेमिनिन हाइजीन है ये इम्पोर्टेंट क्यों है? That's a very good question, Ikram. Many people, they think feminine hygiene is just a part of like a body odor or a menstruation. No, it's extremely important because अगर हम observe नहीं करते hygiene of our body parts, especially the private body parts, it can lead to lots of infections. Not only the odor, bad odor. The infections could be the urinary tract, जैसे bladder की infections हैं, फिर bladder की infections से ऊपर kidneys की तरफ, and imagine they suffer unnecessarily lower backache and the lower abdominal pain or फिर antibiotics and so on. इसी तरह से vaginal infections जो हैं, वो connected हैं to the inner body, inner pelvis के साथ. तो वहाँ से फिर ये शुरू हो जाता है कि आपके अगर प्रेग्नेंट हैं औरतें तो मिसकैरेजेस वगैरह बेबी टाइम से पहले बॉर्न हो जाते हैं और फिर फेलियर टू कंसीव जैसे इनफर्टिलिटी. इट्स अ ह्यूज इशू एंड द मेन कॉज इज द poor hygiene and not trying to scare anybody, but very true that some of the cancers like cervical cancer, they are related to the sexual transmitted diseases के साथ है, और not only the infertility. So अगर ज़्यादा mature women की तरफ चले जाएं तो they do suffer from vulval itching,
they will keep on itching and they will keep on using the on-counter medications या कोई creams वगैरह, but it could be a sign of vulval cancer. So I felt there are so many problems like जो private parts हैं dark हो जाते हैं, hair removal, pubic hair removal की समझ नहीं आ रही होती, तो ये सारी जो चीजें हैं will you be telling about these? Yes, what will be the definitely. things which will be covering in this workshop Yes. specifically? In the workshop, Ikra, we plan to cover from the basic to little more advanced. And as I said, the first session will be general for all women. So day-to-day routines, Okay. how to take care of, how to wash, in which directions. अक्सर confusion होती है. Yes. What type of the fabric for the undergarments to be Okay. used. और अगर itching है तो क्या करना चाहिए, और hairs का removal and the odor, especially intimate relationship में या young girls में, और बहुत ज़्यादा questions होते हैं. और अगर wash करना है तो कौन सी products use करनी चाहिए, कैसे Yes. करना चाहिए, pregnant हैं तो क्या करना चाहिए, pregnancy में कैसे care करनी है, intimate relationship के बाद during menstruation. So all those things we will cover. The focus will be to how to keep the pH Okay. concept, Okay. to give them to keep the pH close to the genital tract. Okay. और साबुन वगैरह ना यूज़ करें जो क्योंकि वो pH को alter कर देते हैं, especially during menstruation. क्योंकि आपके जो body का जो part है ये vagina, उसमें अल्लाह ताला ने natural वो रखे हुए हैं, good bugs and the bad bugs, like the lactobacilli, वो अच्छे वाले हैं. Our workshop will be telling the women and making them aware how to keep them growing and the yeast to keep it at the low. Okay. Or yes. And so they will not be having, so after this workshop they will be able to keep how to keep their vagina nice, healthy, fresh, away from the odor, and not to have the infections and not to have many morbidities. एक और जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है फेमिनिन हेल्थ केयर का जो मैं मैसेज देना चाहूँगी वो है आपका एनुअल चेकअप फॉर वुमेन. दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एंड आई शेयर्ड इट विद मेनी वुमेन सिंस आई हैव कम टू पाकिस्तान. With me as well. जी. एंड कि आप गाड़ी देखिए, वो एक ऐसी चीज़ है कि अगर वो डैमेज हो जाए तो रिप्लेस हो जाएगी. आप उसकी रेगुलर पीरियोडिक सर्विसेज कराते हैं. True. लेकिन women health care जो देखें, we are like the machines, like the factory producing children, relationship, तो हम उसकी क्यों annual वो नहीं कराते. तो my message will be to all those who come for the workshop to schedule the annual checkup. तो उसमें फिर मैं बात करूँगी कि हमारा annual checkup क्या होता है, कैसे करते हैं और क्यों करना चाहिए. Okay. तो ये जो वर्कशॉप है ये किस एज ग्रुप से जो गर्ल्स हैं they can attend? Right. As I said, feminine hygiene is from the time of birth to old age till the lifelong. Okay. हर एज ग्रुप के लिए स्पेसिफिक है, जैसे न्यूबॉर्न से up to young kids, फिर उसके बाद early, adolescent, and then the tweens, 20s, and the reproductive. So essentially 3. तो जो वर्कशॉप है उसमें moms are very much welcome. Women of all ages, mature women, and the young girls. Equally important, I would be very happy to see those girls. और especially ये कि जो menstruation का topic है, we will cover management of menstrual hygiene. और वर्ल्ड में आप सबको पता होगा इस वक्त पूरी वर्ल्ड वाइड menstrual day मनाया जाता है. And the message we want to give कि menstruation should not be considered a taboo and the girls should be ready. Indeed, I will do a separate session for those young girls to educate them about the body changes. Yes. And taking care. We tried a lot to contact with Dr Yasmeen on world menstrual periods की जो management है उसके ऊपर जो डे मनाया जा रहा है, ताकि हम आपसे उसकी हाइजीन के मुतालिक बातचीत कर सकें, कोई अवेयरनेस सेशन कंडक्ट कर सकें. लेकिन आप बिजी थी, अनअवेलेबिलिटी थी आपकी,
तो हम उस दिन कुछ भी ना कर सके 28 मई को. So we can celebrate it any day. Any day, Why exactly. only 28th May? Yes, this is the message. Exactly. So today हमें ये बात समझ आ गई है कि ये जो चीज़ है इसको हम वाकई कभी भी सेलिब्रेट कर सकते हैं क्योंकि ये किस कदर इम्पॉर्टेंट है. Yes. हम जस्ट एक अपनी जो बेसिकली देखा जाए तो अपनी बॉडी और मैक्सिमम अपनी ऑरल हाइजीन से आगे हम किसी मतलब इस कदर इतना फेमिनिन हाइजीन के बारे में नहीं सोच रहे थे. तो अभी इतना ज़्यादा इस चीज़ का प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं. तो मेरा ख्याल है कि ये तो फेमिनिन हाइजीन तो ऑरल हाइजीन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो वेरी इम्पोर्टेंट. एक और चीज़ मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी कि फेमिनिन हाइजीन का मतलब ये नहीं है कि आप स्टोर पे चले जाएं और एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स और द सेंटेड. rather I'm very much away from those products. It should not be scented. Simple, plain, warm water and the simple things. तो basically आप सबको बुलाने का और कम्युनिटी को अवेयर करने का मकसद ही ये है कि हम सिंपल रूटीन को कंसिस्टेंटली और परसिस्टेंटली प्रैक्टिस करें और जो हॉरिबल कंडीशंस हैं उससे बचें. And so you can save thousands and thousands of rupees and plus you would enjoy your health. Yes. और मैं वेट कर रही हूँ because it is very important side by side. It is very interesting as well because you are doing a new way with simple products. Because products की जो चीज़ है that is really very problematic. कि YouTube पे there are paid things. There are so many videos जिनके अंदर ज़्यादातर प्रमोशन ही हुई है कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स की एंड ऑल. तो वो एक्सपेंसिव भी है. एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड. और फिर वो हर वक्त नो फायदा. एग्जैक्टली. तो हम लोग जो है इसको सिंपल जिस तरह आप बता रहे हैं कि इसको हम सिंपल रख रहे हैं और इसके अंदर डेली रूटीन की जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है उन्हीं को यूज़ करके हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना सकते हैं. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम रियली वेटिंग फॉर इट. एंड वंस अगेन I am glad and VLC is very lucky that VLC is having you. You are very one of my favorite collaborator. Oh, thank you so much, Ikra. I'm also very honored to have collaboration with VLC Lahore, and I used to conduct regular workshops and regular community sessions in Canada and England, and I know it's very enjoyable. My passion has been towards the customer care, and I think that my customer are women of all ages, so I want to give the best of myself to the young girls and the women. So the girls from 11 years and onwards can attend this workshop. This is on 30th July. So last date of registering for this workshop is 23rd July. And we'll be waiting for you, and this will be a wonderful session, and we will give certificate for your attendance and participation, and there will be refreshment plus Dr. Yasmeen will be available free consultation, free consultation, and that's a big aid and addition of your services towards the community. Thank you so much. So you can discuss all the problems which you want to discuss with your gynecologist, because Dr. Yasmeen is mashallah very high profile gynecologist. So thank you very much for today, and thank you so much Dr. Yasmeen for coming and giving us awareness about this very big issue. Thank you so much. Thank you so much, and Allah Hafiz.